Good morning, friends. Welcome you again to the YouTube channel of Samyak. So, in the series of the RapidX classes, we are ready with the second part of the public administration. In the previous class, we discussed about few part of the core PubEd. तो अब अपने सेकंड क्लास की बात करेंगे. सेकंड क्लास में कोर पबेड के रिमेनिंग टॉपिक्स की बात करेंगे. तो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. One is the significance, because we have already discussed the meaning of the public administration as well as nature of the public administration and the evolution of the public administration that we have discussed in the previous class through the question answer format. We will adopt the same format here but with new topics. So we will start with the significance of the public administration. Then we will move to the new topic that is known as the NPA or the new public administration. Similarly, we have a concept called the new public management. So we will discuss the NPM, new public management, and after that we will discuss the development administration. So that is the scope of the today's class. तो अपने इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, we will discuss those questions and we will try to cover the subject, cover the topic through the questions. So let's start with the significance part. So in the significance of the public administration, there can be multiple questions, though the nature of the question or answer of the question will almost remain the same, because significance is significance and there is very rare probability of a 2 marker coming from this part, because this part mostly deals with the 5 marker or 10 marker. So there is no technical term in this part. That's why generally in the 2 marker they ask the technical term or explanation of a particular term or comment on a particular term. So these things are not available in the significance part. So it is plain, it is mostly critical part. That's why the 5 marker or the probability of 5 marker or 10 marker is higher in this particular part. Okay, so let's start with the question. So the one question can be, what is significance of the public administration as an activity? यहाँ ध्यान रखें कि in the previous class also we discussed that public administration can be considered as a discipline also and as an activity also. So the significance which we are talking about, that significance is from the perspective of considering the public administration as an activity. As a discipline, we don't consider the significance or we don't count the significance. The simple significance of the PubEd as a discipline is that it motivates or it tells government that how to you can increase the efficiency of the governance. So basically the as in discipline, it simply gives gyan to the government. We are not concerned with that gyan. We are concerned with the significance or the role of the PubEd as an activity. So the first question is simplest question, that is significance of the PubEd, public administration as an activity. Similarly, what is the significance as a discipline of the study? As I already told you that there is very small significance, but still we need to know that. We have the which factors make public administration of developing countries different from the developed countries. So remember that we have a particular topic in the significance, that is the role of the public administration in the developing and developed countries. That is a separate topic. Okay, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या आता है डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में, हाउ डेवलपिंग कंट्रीज और हाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपने देखेंगे. वी हैव द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अज्यूम स्पेशल इंपॉर्टेंस इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन. So it is a good question and it is a larger question. Nowadays the RPSC is slowly changing its nature, so this question fits very well with the changing nature of the RPSC. तो अपने ये भी देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कैसे किसी भी डेवलपिंग कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर क्रिटिकल रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एरा ऑफ द लिबरलाइजेशन हैज चेंज्ड द रोल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हालांकि इसमें जब अपने बाकी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो देयर विल बी सम कंटेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आल्सो, हमें सेपरेटली डील नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी एक व्यू पॉइंट हमें अपने माइंड में क्लियर रखना है कि जब ये 90s में लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ है या 1970s के बाद रेस्ट ऑफ कंट्रीज में लिबरलाइजेशन का फेज चला है, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर पर क्या फर्क पड़ा है, रोल में क्या फर्क पड़ा है, what difference has been caused in the role of the PubEd because of the liberalization. So these are the questions regarding the significance which we need to discuss. So first of all, let's discuss the significance of the public administration in overall. देखो, when we talk about the significance, देखो सिग्निफिकेंस, यहाँ पर सिग्निफिकेंस का क्रक्स क्या रहेगा, एसेंस क्या रहेगा. तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एज ए डिसिप्लिन इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इट गिव्स ज्ञान टू द गवर्नमेंट दैट हाउ you can improve the efficiency of the governance or how you can ensure the better governance in the country. वो तो as an discipline इसका
सिग्निफिकेंस होता है। एज एन एक्टिविटी, अब एज एन एक्टिविटी स्वाभाविक सी बात है, फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग, इट इज द ब्यूरोक्रेसी बेसिकली। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, दैट इज ब्यूरोक्रेसी का, कि ब्यूरोक्रेसी क्या रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री में, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो व्हाई, और इस क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम करूं, सो वी कैन से दैट व्हाई ब्यूरोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बट पहले फिर भी, so we have significance from two perspective. One is as an activity, so if you consider the pub-ed as an activity, and second is as a discipline, so if we consider the public administration a stream of subject or a stream, in this context the significance is very clear. It tells government method to achieve its objective through improvement in government machinery. So in this context, through improvement in government machinery, so basically हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। इफ यू आर ए वेलफेयर स्टेट, देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टू इंश्योर द वेलफेयर। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट विल टेल गवर्नमेंट दैट हाउ you can ensure the socio-economic development of the country. If you are a different type of the government, then your objective will be different. तो ये गवर्नमेंट्स को बताता है कि आपके कंट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ऑब्जेक्टिव अदर किया हुआ है, आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, और उस अचीवमेंट के लिए आपको जो भी गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर जो भी इफ एंड बट्स करने पड़ेंगे, जो भी आपको इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, वो इंप्रूवमेंट्स किस टाइप के होंगे और कैसे किए जाएंगे, सो दैट यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन डिसिप्लिन। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन एज एन एक्टिविटी। सो वी आर डिस्कसिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पब-एड एज एन एक्टिविटी, as an activity. Remember that the significance will remain the same, or the importance will remain the same as it is there for the bureaucracy. As I already told you that public administration is nothing, it is just simply bureaucracy in the simplest meaning. So what role bureaucracy plays in the country, that we need to understand. So first off, we just need to remember that there will be multiple points. Obviously we will not be able to write down all the points. तो हमें इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनको पहले लिखना है। सो द फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द स्पेस एंड टाइम अलाउज, देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द लोअर डाउन पॉइंट्स, बट फर्स्ट रिमेंबर दैट वी नीड टू राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग महिपाल जी। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। The pub-ed is called basis of the government. Basis of the government means it is the public administration which ensures the existence of the government, or which realizes the existence of the government in the mind of the public. सिंपल सी बात है, अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, सरकार कैपिटल में बैठी रहेगी, तो किसी को पता भी कैसे चलेगा कि यहाँ पर सरकार है भी। तो लोगों को रियलाइज करवाने के लिए, यस देयर इज ए गवर्नमेंट, और एंड व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज दैट डूइंग, government need to come to the ground, and it is the bureaucracy which comes to the ground on behalf of the government. तो अगर ये नहीं होगा तो लोगों को रियलाइज भी नहीं होगा कि there is a government. इसका सिंपल सा मतलब है कि pub-ed ensures that public realizes the existence of government through execution. So when they execute the schemes, then people realizes that yes there is a government. तो इसके बिना इसका कोई existence ही नहीं है, या people लोगों को realization ही नहीं होगा। Similarly, second thing is instrument to provide services, like health, education. So pub-ed is all about implementation, and government provides various services to the citizens. Those services are provided through the machinery established, which is operated by the
which is operated by the bureaucracy. So it is the bureaucracy which runs that machinery, and through that machinery government provides the basic and necessary services to the citizens. Similarly, instrument to bring social change. Now, we have various provisions in the constitution to ensure that Indian society will be a welfare society and Indian society will be a equal society, inclusive society. We have the provisions of prevention of atrocities to the SC/ST Act in the law made by the parliament. Similarly, we have the provision to prevent the untouchability, we have the provision to prevent the discrimination. तो ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देने से अपने आप अनटचेबिलिटी नहीं खत्म होगी. इफ यू वांट टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक ए लॉ रिगार्डिंग पनिशमेंट फॉर द अनटचेबिलिटी एंड विल हैव टू प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट दैट लॉ. देन ओनली अनटचेबिलिटी विल गो फ्रॉम द सोसाइटी. So that implementation part is important. It is not important that you simply made the law regarding social change. Now that implementation is done by the public administration or bureaucracy basically. So if that is being done by the bureaucracy, so it is the bureaucracy which is an instrument to bring the social change. So we can write here by implementing statutory provisions, by implementing statutory provisions. Similarly, it is basis it is a stabilizing force. How? Because political executives keeps on changing. So in the country like India, the political executive, that is Prime Minister and Council of Minister, or CM and Council of Minister, that will change after every 5 years, and there is a good probability that a new person will come that will be of the new ideology. So if people keep on coming with the new ideologies, obviously there will be no continuation, or there will be no continuation of the previous regime. आप previous regime को totally separate नहीं कर सकते. There is change of the government, country is same, और the nation is there only, society is there only. तो आपको कंटिन्यूएशन करने के लिए जो पिछला प्रीवियस जो भी रिजाइम है उसमें से कुछ पॉलिसी जो है और जो नेक्स्ट रिजाइम न्यू रिजाइम जो भी आ रहा है उन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस करना पड़ता है. वो कन्वर्जेंस पॉसिबल इसी वजह से हो पाता है, दैट कन्वर्जेंस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी हैव द ऑफिसर्स हु वर देयर इन द प्रीवियस रिजाइम आल्सो एंड हु आर देयर इन द न्यू रिजाइम आल्सो. तो दो डिफरेंट रिजाइम्स को कंजक्ट करने का काम जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी करती है, जिससे कि कंट्री के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है. अदरवाइज कंट्री हर 5 साल के अंदर टोटली अप एंड डाउन होगा. उस टोटली अप एंड डाउन को नॉर्मलाइज करने का काम जो है दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज. सिमिलरली वी हैव these are called the agent of socio-economic transformation. Socio-economic transformation. So obviously a country which is very backward, specifically the socio-economically backward, economically backward means per capita income is low, but social backwardness का मतलब है कि वहाँ पर social indicators weak है, जैसे कि अपने इसको HDA के थ्रू मेजर करते हैं, या अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर the level of education, level of health is very poor. तो जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको इंश्योर करने का काम भी आपका पबेड करता है. सो दिस इज द रोल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और द difference in developing and development countries or difference in administration of developing and development. ठीक है, अगर अपने डिफरेंस की बात करें तो कुछ फीचर्स होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेस पे ये डिफरेंस किया जाता है. अब वो डिफरेंस क्या आता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो अपने कंपैरेटिव मैनर में लिख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका रोल चेंज हो जाएगा. फर्स्ट, इन डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, इनका जो पॉलिटिकल रिजाइम होता है दैट इज वेरी डाइवर्स. डाइवर्स का मतलब दैट इज नॉट वेरी स्टेबल, because obviously they are in the construction phase, they are in the building phase, they are building the country, that is not that much stabilized like USA.
तो यहां पर डाइवर्स होने के कारण होता क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं उनको इंप्लीमेंट कर देखते हैं, कुछ आइडियाज को कैरी ऑन करते हैं, कुछ आइडियाज को जो ड्रॉप कर देते हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो होती है उसके कारण कंट्री की पॉलिटिकल नेचर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, इन डेवलप्ड कंट्रीज जो होता है दैट इज वेरी स्टेबल रिजाइम, इसलिए अब इससे फर्क क्या पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। सो ऑब्वियसली इफ योर पॉलिटिकल रिजाइम इज डिफरेंट, सो द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज दे विल हैव टू accept the new changes and will have to work as per the new changes decided by the political organ of the country। तो एक तो ये डिफरेंस आ जाता है। सेकंड, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, इन डेवलपिंग कंट्रीज इमिटेशन ऑफ अदर कंट्रीज। यहां पर इमिटेशन का मतलब क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, दीज कंट्रीज डोंट डेवलप देयर आइडियाज बाय देयर ओन। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है रिगार्डिंग द गवर्नेंस, दो स्ट्रक्चर्स आर नॉट डेवलप्ड बाय देयर ओन, दे विल कॉपी सम स्ट्रक्चर फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्टली फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। दैट इज सेम विद द केस ऑफ द इंडिया। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द सोर्सेज व्हिच आर बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो उसमें भी हम देखते हैं कि, और दैट इज वन एलिगेशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्री, इट इज नॉट ओरिजिनल। और ऐसा होता भी है, इन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडिया वी हैव copied structure either from the Britain or from some other country। That is true in case of the constitution also, and that is true in case of the formation of the public policy and execution of the public policy कि हमारी structures कैसी चलेगी, हमारी terminology कैसी चलेगी। Those structures are from the other countries, we have not developed them indigenously। अब इस imitation से फर्क क्या आता है कि आपने structures तो वहां के कॉपी कर लिए, ऑब्वियसली जो आपके सिविल सर्वेंट्स है वो तो आपके लोकलाइट्स है, वो तो इन सर्कमस्टांसेस में निकले हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है आपके, उनके सर्कमस्टांसेस और आपके स्ट्रक्चर्स के पैटर्न और स्ट्रक्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों अलग अलग रहते हैं। जब वो दोनों अलग अलग रहते हैं तो दोनों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनमें हो नहीं पाता है, तो एक प्रॉब्लम आती है। अपने हमेशा कहते हैं ना कि जो कॉलोनियल लेगेसी है उसकी वजह से इंडिया में क्या प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी। उस टाइम पे ठीक है जैसे चलता था जो चलता था, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। अब वो स्ट्रक्चर्स आज के टाइम में आज के ऑब्जेक्टिव के साथ आज की सोसाइटी के सर्कमस्टांसेस में रेलेवेंट नहीं रहती है। सो दैट इज वन डिसकंटिन्यूटी और abnormality between the structure and the people who are running the structure। Second, हाई ऑटोनॉमी टू ब्यूरोक्रेसी। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है इनके अंदर, बिकॉज दे फॉलो द SOP, for everything they have the standard operating procedure। when they have the standard operating procedure for everything, so there is no very less room for the bureaucrat to change the structures or to play with the structures। but in case of the developing countries, obviously the SOPs are not there। second, the bureaucracy is already overburdened, single person is handling the charge of the various department। third, the public of the developing countries is not that much developed, वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते जिसकी वजह से अवेयरनेस भी नहीं होती है और वो अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। जब वो अवेयर नहीं होते और वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है द सिविल सर्वेंट्स और द ब्यूरोक्रेट्स कैन प्ले विद द स्ट्रक्चर, और इसलिए उसमें ऑटोनॉमी भी आती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है नॉर्मली ऐसा, दिस इज नॉट रूल बट जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट once in the 1970s, 1960s, 80s, countries used to be socialistic in nature, most of the countries, especially the developing countries। when they were socialistic in nature, obviously the powers of the bureaucrats will be on the increased sides, तो उनकी पावर वैसे ही ज्यादा होती थी। तो ये रहता है। नेक्स्ट वी हैव द करप्शन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। so the component of corruption is very high in the developing country। so इसलिए जो होता है ये डेवलपिंग कंट्रीज होती है डेवलप्ड कंट्री से अलग होती है। अब बात आती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है।
या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ दी, ये तो अपने फीचर्स हो गए। अब उनके फीचर्स की अगर बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज, सो द फर्स्ट पार्ट इज हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, क्योंकि उनके पास दो चीज होती है, देखो डेवलपिंग के पास, वन ऑब्वियसली लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड द सिंगल ह्यूमन रिसोर्स विल बी कंट्रोलिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। ओके, तो वो जर्नलिस्ट अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हैं। वहां पर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होकर वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वी हैव दैट इन द इंडिया। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, दे आर टेक्निकल इन नेचर, वी कैन से दैट, और जिसको अपने कहते हैं दे आर स्पेशलिस्ट इन नेचर। सो दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, स्टाफ की जो है इतनी ज्यादा शिफ्टिंग भी नहीं होगी, और एक आदमी जो जिस जिस चीज का एक्सपर्ट है वो उसी का काम करेगा। दूसरा, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है इनके अंदर एक चीज होता है, दैट इज ग्रेट स्ट्रेस ऑन ट्रेनिंग, जो कि डेवलपिंग कंट्री में मिसिंग होता है, डेवलप्ड कंट्री में बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। तीसरा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन। So that is technology driven, or they use technology very much slowly and slowly. We are also starting with that. Similarly, in the developed countries, the regulatory regime is very strong or sound regulatory regime. आप इनको शॉर्टकमिंग्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज भी लिख सकते हो कि इसमें ये नहीं होता है सिविल सर्विसेज में। सिमिलरली वी हैव द हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज विद ड्यू टाइम उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को इतना सिंक्रोनाइज कर लिया होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, कि एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट को रीइंफोर्स करता है, जबकि ऐसा जो है डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता। सो दीज आर द फीचर ऑफ द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ कम गो बैक टू द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट इज द व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, हमने कर लिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एज ए डिसिप्लिन ऑफ द स्टडी, वो भी हमने कर लिया। which factors make public administration of the developing countries different from developed countries, ये भी हमने कर लिया, that what is the difference। अब next is the public administration assumes special importance in the socio-economic stability of the developing countries। तो देखो जो अपने पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं में से अपने को पॉइंट्स निकालने हैं, या ऐसा करें कि अपने पबेड्स रोल in socio-economic stability of developing countries। तो सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है दैट इज अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपिंग कंट्री, एंड दिस रोल इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज देन द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, या ऐसा कहा जाए कि हाउ इट इंश्योर्स द सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो पहली बात, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है दैट इज बाय अचीविंग द इक्वालिटी। नाउ हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स इन अचीविंग द इक्वालिटी, ऑब्वियसली इट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल इंप्लीमेंट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द इक्वालिटी। by implementing statutory provisions and if you are able to achieve the equality, then obviously the stability of your society will go higher notches, or the stability of the society will be increased a lot. Second thing, by bringing the socio economic development। अब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे ये, by implementing schemes, they have the schemes। Third, by bringing social change, yeah, we can call it the eradicating the
discrimination and all these things, or basically to ensure the dignified life for all. Till the time all the people are not having the dignified life, obviously the society can't be considered stable. Similarly, the this public administration or the administration of the developing countries, they can help by ensuring participative decision making. So if you take people along with you, then people will be happy with the country, and rather than having negative feeling with the country, they will have positive feeling with the country. And when they have the positive feeling of the country, that is the social and economic stability of the country. Second, next, by playing role of producers through PSU, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि व्हेन देयर इज क्राइसिस इन द मार्केट्स, ऑब्वियसली द प्राइवेट डिमांड विल बी वेरी लो एज वेल एज द प्राइवेट प्रोडक्शन विल बी वेरी लो. In that scenario, the government will take the responsibility of the production and demand, and for that they have the mechanism of the PSU. So through these mechanism, the government will or government can basically become, or the public administration can become the what you call the agent of the socio-economic stability in the civil developing society. Now we have one more dimension, that is the PubMed in era of liberalization. So before liberalization or during the socialism in India, the basic role of the public administration used to be the basically social development. They were not much more concerned on the economic development, and with the objective of social development, they were much more concerned on regulating the tight regulation of the society. जो अपने कहते हैं कि we used to have the inspector Raj, we used to have the license Raj, we used to have the red tapeism. तो ऐसे features देखने को मिलते थे which makes the bureaucrats very powerful, or the power of the bureaucracy is very high in the socialism. But when we did the liberalization of the economy, obviously things started to change. Now we are not only and only focusing on the social change or the social development, we are also focusing on the economic development of the society. Dusra, earlier the investment used to be made by the government only, so there was no push or there was no need to attract the investment, because it was the government which was opening the PSUs in different regions of the country. Now the investment is not only being done by the government. Now we need to attract the investment of the private sector. So the main focus of the bureaucracy, at least the top level bureaucracy, is to attract the investment. And to attract that investment, the structures of the bureaucracy is being changed. Now bureaucracy is being made lean and responsive and flexible. We can't operate with the rigid bureaucracy basically. That is the new public administration. So we are adopting all these things to ensure that we remain relevant in the phase of the liberalization. Now, if we talk about change in role because of the public administration, so we have new responsibility. First responsibility is to attract the investment. Now keeping in these roles, the structures of the bureaucracy will be changed in the liberalization phase. Second is the role of umpire only and giving away रोल ऑफ प्लेयर. यहाँ पर अंपायर और प्लेयर का मतलब है कि अंपायर, देखो इकोनॉमी के रूल्स डिसाइड्स तो, या कंट्री के रूल्स तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी. सो इन एवरी कंट्री अंपायर इज गवर्नमेंट ओनली. But when government has its own business in the name of the PSUs, then they are playing the role of player also. They are player of market. For example, aviation sector का player था government when they used to have the Air India. अब Air India नहीं रहा तो government जो है वो उस sector का player नहीं रहा. So that is the scenario. तो पहले जब सोशलिज्म हुआ करता था या जब लिबरलाइजेशन नहीं था, तो दे यूज्ड टू बी प्लेयर as well as they used to be umpire. Now they are not players because they are moving away from the PSUs. The PSUs are being privatized, sectors are being privatized, so they are limited to the role of the umpire only. Second,
थर्ड इज specialization because of complex technological matters. अब with the developing entry of the private sector, पहले क्या होता था कि जितनी भी इनोवेशंस होती थी दोज यूज्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी किस पेस पे टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कब इंडिया के अंदर एआई लाना है, कब नहीं लाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है या टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, दैट यूज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। नाउ द टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर गवर्नमेंट स्लो मूवर भी है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, बट प्राइवेट सेक्टर कांट बी स्लो मूवर इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, तो वो तो बहुत फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। जब तक गवर्नमेंट रियलाइज भी करती है कि एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई है, तब तक वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी होती है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द साइबर क्राइम। वी विल ऑलवेज रिमेन बिहाइंड द क्रिमिनल्स, वी कांट बी प्रोएक्टिव। तो ऐसा इन्वायरमेंट जब होता है जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकल मैटर्स होते हैं, ऐसे मैटर्स के अंदर आपको ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अब सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। Most of the things are out of control of you. You are simply regulator basically. You are not decider of the economy in the liberalization phase. So you will have to operate in this particular environment. And obviously the thing is that you will also, or the government will also, now the things will be participative and transparent. पार्टिसिपेटिव एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन अब आपको देना पड़ेगा, बिकॉज विद द डेवलपमेंट पीपल विल बिकम अवेयर। So as they become aware, obviously you will have to ensure the transparency of the administration. Now you can't operate in the opaque administration. Now the administration can't be a privilege of the few. All people will have to be taken together. So these are the differences which occurs because of the liberalization. Okay. So that is about the significance part. Now we move to the next part. That is new public administration. ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब अपने बात करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली अपने when we were talking about the evolution of the public administration in the previous class, जब हम पिछली क्लास में एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि बाय द टाइम ऑफ द 1938 देयर वाज द क्राइसिस ऑफ द आइडेंटिटी, or there was the era of the challenge, and after that era of challenge there was the crisis of the identity. तो वहां पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रेलेवेंस अपना लूज कर दिया। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रेलेवेंस लूज कर दिया, तो जो स्कॉलर लोग थे या जो यंग पीपल थे हु वांटेड टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट दे लॉस्ट द इंटरेस्ट, when the people were, or the less people were interested, obviously the departments of the public administration in various universities started to be closed down. Now they were not having opportunity to study even if they wanted to study. तो वहां पर एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन द टाइम पीरियड ऑफ द 1960। उस पर्सपेक्टिव को अपने कहते हैं एनपीए और द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट वाज अ न्यू पर्सपेक्टिव इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इट वाज न्यू डायमेंशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन which got developed in the 1960, and the basic purpose of this particular dimension और perspective वो ये था कि उन्होंने रियलाइज किया कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत रिजिड बना दिया है, हमने कुछ सेट रूल्स लिख लिए हैं, एक रूल बुक बना ली है, और हम चाहते हैं कि हर कंट्री को वैसे ही गवर्न किया जाए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको हर कंट्री को उसकी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, उसके पीपल की डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल बनकर आपको गवर्न करना पड़ेगा, तभी लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी जो है उसको लोग रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस में या डिसिप्लिन के अंदर ये चेंजेस लाने के लिए एक नए टाइप का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया गया, जिसको नाम दिया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एनपीए बेसिकली क्या था? एनपीए वाज अ न्यू पर्सपेक्टिव डेवलप्ड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग 1960s टू मेक पब्लिक और टू कीप द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेलेवेंट विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। वो होता है आपका एनपीए। ठीक है। सो
first of all, if we write down the first, let's discuss few questions. One is what do you understand by the new public administration? Second is who is credited for development of the concept of the new public administration? Very simple question. Third, comment on the Minnebrook conference. We will discuss the Minnebrook conference as well as Philadelphia conference. Okay. Similarly, what is Honey report? We will discuss that. Which are three anti-goals of the NPA? One of the most important questions of the PubMed in the 2-marker, and it is repeated very frequently. So, we just simply need to know the names of the anti-goals, but in the discussion phase, we will discuss the meaning of the anti-goals also. In the 5-marker, the probable question can be the why the need of the NPA or the new public administration was felt, or what were the circumstances in which this concept of the NPA was developed. Second is also give brief timeline development of the concept. So, what factors or when those factors happened which led to the development of the NPA, principles and features of the NPA, overall NPA or a brief about NPA, that how it is different from the regular administration. In the new public discipline of public achieving this is so in the 10-marker the probable question can be the new public administration was much needed step to keep discipline of public administration relevant and it has been successful in achieving its objective. तो ये सब क्वेश्चन अपने को करने हैं. सबसे पहले अपने मीनिंग कर लेते हैं. मीनिंग ऑफ एनपीए, तो वैसे तो कि सेपरेट तो है नहीं, ये तो केवल रूल बुक चेंज हुई है. बात इतनी सी है कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो रूल बुक थी दैट यूज्ड टू बी रिजिड एंड फिक्स्ड. अब रूल बुक जो है उसको ओपन बुक बना दिया गया विच इज एबल टू चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. So what is NPA? NPA is a new perspective of public administration developed in 1960s to keep PubMed relevant with circumstances of society, ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बात आती है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इसकी जरूरत क्यों पड़ी और व्हाई देयर वाज नीड ऑफ द चेंज ऑफ द पर्सपेक्टिव. क्योंकि 1927 से लेकर जो 1937 तक की फेज थी that was this डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वो जो फेज थी उसमें जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए थे वो उस टाइम पर देखने को अच्छे लगते थे बट वो प्रिंसिपल्स फेल हो चुके थे. अब जब प्रिंसिपल्स फेल हो चुके थे तो स्कॉलर्स ने और लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो ट्रस्ट था, इस डिसिप्लिन के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो रिस्पेक्ट कम हो गया. अब when there was reduction in the respect, so obviously it was necessary to earn the respect again or to earn the respect back. Now to earn the respect back or again the government or the scholars had to make some changes in the concept of the public administration. तो इस टाइम क्या क्या ऐसा हुआ कि इसको जरूरत पड़ी. फर्स्ट एक क्वेश्चन भी आपने अभी पढ़ा था सर्कमस्टांसेस का. So these were the circumstances which necessitated the development of the public administration. One is the destruction caused by World War II. Now the 1960s was the time when countries were restarting their journey, the journey of the reconstruction and building of the countries. तो जब उनको रिकंस्ट्रक्शन करना था, खुद की कंट्रीज को स्क्रैच से बनाना था, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, एवरी इंफ्रा वाज डिस्ट्रॉयड, पीपल वर नॉट हैविंग द बेसिक एम्यूनिटीज. तो वो सारी चीजें जब रीडेवलप करनी थी तो उसके लिए उन्हें ओल्ड सिस्टम में नहीं काम हो सकता, दे वांटेड द न्यू सिस्टम. नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन
So this destruction led to the need of reconstruction. Hence they needed new structures of administration which can be conducive for the reconstruction of the countries. Similarly, there was the Vietnam War, and this Vietnam War is considered one of the most embarrassing thing for the USA, or specifically the USA government. It was the time when the citizens of the USA started to accuse or started to consider the USA government failure, loser. नाउ ऐसे सिचुएशन के अंदर जब पब्लिक ओवरऑल आपसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स में है और पब्लिक ओवरऑल और जिसको अपने कहते हैं त्रासद है, पीपल वर सफरिंग, तो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन वेंट ड्रास्टिकली डाउन. So when there was drastic change or drastic reduction in the credibility of the USA administration, obviously उनको अपनी credibility regain करने के लिए या कुछ ऐसे changes की जरूरत थी ताकि लोगों को लगे कि yes, government is for benefit of them and government is not destruction, is not for the destruction of them. So Vietnam War means anger in the society, need of new structures to regain respect and trust, otherwise people will not trust you. Second thing, now this was the time period when the economies were going through changes. 1960 and 1970, this was the time when tertiary sector was emerging in most of the economies. इससे पहले जो इकोनॉमीज होती थी वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की होती थी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को टाइट रेगुलेशन किया जाता था विद द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिकली सेकेंडरी सेक्टर को टाइट रेगुलेशन किया जाता था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द लेबर वेलफेयर. उस लेबर वेलफेयर के नाम पर गवर्नमेंट्स यूज्ड टू हैव द वेरी ह्यूज पावर्स. अब जो सेकेंडरी सेक्टर का रोल था उससे भी ज्यादा रोल जो है टर्सरी सेक्टर का होना शुरू हो गया था. इट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट फेज. तो जब टर्सरी सेक्टर का रोल शुरू हो गया तो यहाँ पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन वैसे नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द टर्सरी सेक्टर दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली लिटरेट. तो उनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर लेबर क्लास होते नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है. तो अब उनके एक्सप्लॉयटेशन की जरूरत, एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप नहीं था. जब उनके एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप नहीं है तो फिर उनके एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने की जरूरत नहीं है. तो जो पहले ऑब्जेक्टिव्स थे, जो पहले सिस्टम्स थे, वो तो अब चेंज करने ही पड़ेंगे. सिमिलरली देयर वाज जनरेशनल शिफ्ट. ये जो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ था इन द 1927 बेसिकली, दो इट गॉट सेपरेटेड इन द 1887. तो जब ये 1927 में जो डेवलप हुआ था तो उस टाइम पर देयर यूज्ड टू बी अ क्लास ऑफ द स्कॉलर्स, और those people, all people were of the same age, so they were of the same ideology. Now by the time of the 1960s or 1970s, the new generation took over the control of the discipline. So when the new generation took over the control of the discipline, obviously the new generation will try to implement the new ideas, or whenever they found some shortcoming in the ideas of their of the old scholars, they will try to change that idea. So that is how a new perspective developed, or that is how there was need of the new perspective in the public administration. Now comes the question, when there was question of history or evolution of the NPA, okay, or we can call it the events which led to the emergence of the NPA. We have the Honey report. So we are tackling this question. This also give the brief timeline of the development of the concept. So we are talking about the brief timeline. So there was Honey report. In 1967. अब when the brief timeline, अगर brief timeline जो है किसी क्वेश्चन के साथ में ही पूछी जाए तो obviously we will not be able to give more space to the timeline. तो आप simply इतना लिखकर छोड़ सकते हैं. तो ये हनी रिपोर्ट क्या था, इसका बेसिक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं. इट शोज दैट देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन
between higher education of this public administration and realities. तो इन्होंने कहा कि वास्तव में जो सिखाया जा रहा है वो ग्राउंड पर होता नहीं है, और ग्राउंड पर जो करने की जरूरत है वो सिखाया नहीं जा रहा एडमिनिस्ट्रेटर्स को. So there was lack of communication between the school. There was lack of communication between the students of the public administration and the need of the public administration. Similarly, there was a concept that is known as the Philadelphia Conference. Remember that all these things can come separately in the 2 marks. For example, they can ask you to comment on the honey report. They can ask you to comment on the Philadelphia Conference. अभी Philadelphia Conference क्या थी? ये हुई तो 1967 में ही थी. अब इसमें क्या हुआ? This was chaired by James C. Charlwood. Chaired by James C. Charlwood. He was the chairman of this conference. तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस क्या थी कि in this conference, scholars accepted the need of new dimension. तो ये वो टाइम था जब सबको ये रियलाइज होने लगा कि यस वी नीड द न्यू पर्सपेक्टिव इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये जैसे नॉर्मली नेशनल लेवल के सेमिनार्स होते हैं उस टाइप का एक सेमिनार था जिसमें ये आइडिया निकला और मेजॉरिटी ने इसको एक्सेप्ट किया कि यस वी नीड टू चेंज द सिस्टम. सिमिलरली वी हैव वन मोर कॉन्फ्रेंस दैट इज नोन एज द मिनूब्रुक कॉन्फ्रेंस. तीन कॉन्फ्रेंस हुई है 1968 में, 88 में और 2008 में. ठीक है, तीन कॉन्फ्रेंस हुई है मिनी ब्रुक के नाम से. इस मिनी ब्रुक कॉन्फ्रेंस की खासियत क्या है? द कॉन्फ्रेंस डोमिनेटेड बाय यंग स्कॉलर्स. तो ये जो मिनी ब्रुक कॉन्फ्रेंस थी डोमिनेटेड बाय यंग स्कॉलर्स, इसके अंदर पहली बार जो भी यंग क्राउड था वहां का that got collected and decided that we need to change the system of the public administration. और ये जो conferences the mini book जिसमें first important है, this conference was chaired by Dwight Waldo, ये इसके चेयरमैन थे कॉन्फ्रेंस के. तो ये 2 नंबर में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स जो है इन सब इवेंट्स के रिजल्ट की फॉर्म में एनपीए निकल कर आया. अब ये जो ये कहा जाए कि किसको इसका क्रेडिट दिया जा सकता है, तो देखो किसी एक इंसान को तो क्रेडिट नहीं दिया जाता. सो इट वाज रिजल्ट ऑफ दीज 3 बेसिक लिटरेचर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. बट इफ यू वांट टू गिव क्रेडिट टू सिंगल इंडिविजुअल देन दैट विल बी द ड्वेलाइट वोल्डो. ठीक है, अब बात आती है देयर वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द एनपीए एंड दैट क्वेश्चन वाज What are 3 anti-goals of the NPA? ये anti-goals का concept जो है that is the prime question from the NPA and that is one of the most important question from the NPA. तो ये anti-goal वाला concept क्या होता है अपने वो भी बात कर लेते हैं. 3 anti-goals of the NPA. देखो इन्होंने कहा बेसिकली कि अभी तक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था that used to believe in the status quo. ठीक है, अब हमें थोड़ा सा लोगों की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा. मेंटलिटी को चेंज करने के लिए इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए, उनको 3 एंटी गोल्स कहते हैं. वो 3 एंटी गोल्स कौन से थे? जैसे एक होता है एंटी पॉजिटिविस्ट, वन इज एंटी टेक्निकल एंड वन इज एंटी हिरारिकल. एंटी टेक्निकल एंड एंटी हिरारिकल, और यही 3 इसके फीचर हैं. और अगर ऐसा कहा जाए कि what differentiates NPA from the other or the traditional public administration, so it is this difference between the NPA and the public administration. अभी एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है? देखो
इससे पहले जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ करता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, दैट यूज्ड टू बी ऑफ द मैक्स वेबर। वेबर ने कहा था दैट द टू ब्रिंग द इम्पार्शियलिटी, बेसिकली द सिविल सर्वेंट शुड बी वैल्यू फ्री, उसके अंदर कोई भी ह्यूमन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, he should not have the burden of the human values, then only he will be able to follow the SOP, because you know that we follow the process of the procedure established by law. So he should not apply his own values, he should not apply his own rational, उसको जो SOP पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स या पॉलिटिकल डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री के द्वारा दिया गया उसको फॉलो करना है। तो इससे पहले जो कंसेप्ट होता था दैट यूज्ड टू बी द वैल्यू फ्री। इन्होंने कहा कि अब वैल्यू फ्री होकर आपसे काम नहीं चलेगा। If you want to ensure the responsive governance, or if you want to ensure the responsive administration, then the public administration need to have few values like sympathy. जब तक वो वैल्यूज नहीं होगी तब तक वो लोगों के दुख को रियलाइज नहीं कर पाएगा, और जब तक वो लोगों के दुख को रियलाइज नहीं करेगा तब तक वो दुख को एलिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है। वैसे ही एंटी टेक्निकल, इससे पहले तक बिफोर द इमरजेंस ऑफ द एनपीए, कोशिश ये थी कि कैसे भी कर जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट शुड बी लुक लाइक साइंस, तो उसको साइंटिफिक करेक्टर देने के लिए उसके अंदर जानबूझकर टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल कंसेप्ट्स, टेक्निकल प्रोसेसेस रखे गए। इन्होंने कहा कि आप उसको साइंस बनाने के लिए आप उसको लोगों से दूर कर रहे हो, बिकॉज इफ यू मेक दैट साइंस देन ऑब्वियसली दैट विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक। So your focus should be to make it relevant for the people rather than making it scientific. So you need to ensure the public ad is very simple, it is not complex, that is anti-technical. Anti-hierarchical, इससे पहले the main feature of the bureaucracy used to be the hierarchy. There will be bulky hierarchy, there will be multiple levels of the hierarchy for any particular subject, and that hierarchy, the basic logic behind that hierarchy used to be the check and balance mechanism. तो गवर्नमेंट्स के पास जब गवर्नमेंट के पास जब अपनी रेगुलेटरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता था तो उनके पास रेगुलेटरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का एक ही तरीका होता था, दैट यूज्ड टू बी चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, कि एक ऑफिसर के ऊपर दूसरा ऑफिसर बैठा दो, दूसरे के ऊपर तीसरा बैठा दो, तो वो जो है एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल जो है सिस्टम को हाईजैक नहीं कर पाएगा। दूसरा डिस्पोटिज्म का भी डर रहता था कि कोई इंडिविजुअल सिस्टम को हाईजैक नहीं कर ले। इसी डर की वजह से इंडिया के अंदर आज तक सीडीएस की पोस्ट नहीं बनाई गई थी। अब इन्होंने कहा कि वो नेचर अब नहीं चल सकती। इफ यू वांट टू बी रेलेवेंट देन यू विल हैव टू have the flexibility in the system which can be changed as per the circumstances and need of the society. अगर आप सोसाइटी की सर्कमस्टांसेस और नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर्स को चेंज ही नहीं कर सकते तो ऐसे पबेड का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये 3 एंटी गोल्स माने जाते हैं। तो अपने पहले एंटी गोल्स की बात कर लेते हैं। तो एंटी पॉजिटिव मींस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक सर्वेंट बेसिकली कैन हैव वैल्यूज rather than being value free. Anti-technical means focus should be on making pub-ed simple and relevant rather than making it science. It should be the subject of general public, it should not be the subject of few scholars. Anti-hierarchical means the bureaucracy should be lean, flexible and responsive. तो ये 3 एंटी गोल्स होते हैं। सो बेसिकली दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द एनपीए और दीज 3 थिंग्स और दीज 3 पर्सपेक्टिव्स वर चेंज्ड अंडर द एनपीए। ओके, now comes the question, what are the principles of the NPA? So we have a question regarding features and principles of the NPA.
which are the major principles of the NPA. Now, obviously, the content over the principle is very large. So, I will give you small explanation, but in the exam, if that comes in the 2 marks or in the simply in the 5 marks, then you can simply draw the various principles rather than giving the explanation. And if you simply want to draw principles of NPA, so I will give you one more method which can be used to draw the principles. One is the relevance. So, the first focus or first principle is the relevance. Relevance means that earlier the traditional public administration that used to focus on increasing the efficiency, that how we can increase the efficiency, and for that purpose or to with the objective of increasing the efficiency, they forgot the relevance of the public administration, or they forgot the relevance of the government, whether you whatever structure you are establishing, whether that structure is relevant for the public or not. तो और दूसरा, जब आप स्टैंडर्डाइज प्रोसेस लगा देते हैं हर कंट्रीज के अंदर, ये एक सिंगल प्रिंसिपल डेवलप कर लेते हैं, तो वो जो प्रिंसिपल जो भी होंगे वो उस कंट्री के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है या नहीं, उसको तो आपने इग्नोर कर दिया. तो रेलेवेंस का, यहाँ पर रेलेवेंस का मतलब है द मेन फोकस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी टू एस्टेब्लिश सच स्ट्रक्चर्स that structures are relevant to the circumstances of the society. आप प्रिंसिपल्स को फॉलो मत करो. यू बेसिकली वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चलेगा. वन साइज फिट ऑल अप्रोच जो अपना होता है वो नहीं चलेगा. यू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी. सिमिलरली वैल्यूज, अपने बात की अभी, दैट द एडमिनिस्ट्रेटर मे पोजेस फ्यू वैल्यूज. Similarly, we have the social equity. We have the social equity. So basically, this should be the major aim of PubMed. So slowly and slowly, the equality should be established by the PubMed. We have the change. Believe in change and not status quo. Not status quo. So every time be ready to change, because if you don't change, then you will not remain relevant with the changing circumstances. So to keep you relevant with the changing circumstances, you will have to change. आप status quo से development नहीं कर सकते. Similarly, client orientation. क्लाइंट का यहां पर मतलब है सिटीजन. क्लाइंट ओरिएंटेशन का मतलब सिटीजन ओरिएंटेशन. सो द सिटीजन्स आर कंसिडर्ड क्लाइंट्स. So the whole structure should be oriented towards the citizens, which means that the basic aim of all the structure should be to ensure the welfare of the citizens or to fulfill the need of the citizen. That should be the basic thing in the mind whenever we are establishing the structure of the public administration. ठीक है, तो ये फीचर्स है. अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना हो, जो ब्रीफ अपने भी मैंने आपको डिक्टेट किया है या आपको एक्सप्लेन जो किया है, तो आप इसको पैटर्न फॉर्म में भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ज्यादा दिखने में अच्छा रहता है ये कि एक फीचर आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा. दूसरा, ये टाइम कम कंज्यूम करता है. और तीसरा, ये आपके कॉपी के अंदर एक डिफरेंट एंगल ऐड कर देता है, क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बेसिक टेक्स्ट लिखना ही लिखना है, तो वो टेक्स्ट का फ्लो तो चल ही रहा होता है. जब उस टेक्स्ट के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, एक पिक्टोरियल इमेज कोई आती है, तो वो एग्जामिनर को फील गुड फैक्टर देती है, और उस फील गुड फैक्टर का एडवांटेज आपको एक्स्ट्रा मार्क्स में मिलता है आगे वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर. So this is all about the perception building basically. So the copy of the mains is about perception only. You need to keep your perception positive in the mind of the examiner. अगर उसको लगता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो वो आपको कमजोर आंसर के अंदर भी थोड़े से अच्छे मार्क्स दे देगा. अगर उसको लगता है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, यू डोंट हैव द डाइवर्स नॉलेज, तो वो आपको अच्छे आंसर के अंदर भी लोअर साइड पे मार्क्स देगा, हायर साइड पे मार्क्स नहीं देगा. और हायर साइड पे अगर आपको मार्क्स मिलते हैं थ्रू आउट दी कॉपी, तो आपको हर पेपर में ज़्यादा भी नहीं तो 5-7 नंबर का बेनिफिट तो हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली चारों पेपर में जोड़कर 25-30 मार्क्स का या 25 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है. तो आपको हायर साइड पर नंबर लेने के लिए सेम आंसर के अंदर भी you will have to create the positive perception in the mind of the examiner, and for that positive perception we need to be little bit innovative. We need to have the new public administration rather than having the traditional administration. We need to be responsive, we need to be relevant. Okay, so these are the principles of the NPA.
Now comes the question. There is one more question about features of the NPA. तो अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, उससे पहले 3 एंटी गोल्स पढ़े, फिर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े। अब हम थोड़ा सा जो है फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं एनपीए की। फीचर्स ऑफ एनपीए, पहला फीचर माना जाता है कि इट इज प्रिस्क्रिप्टिव rather than डिस्क्रिप्टिव। देखो प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, ये डॉक्टर जब लिखता है दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन, और दवाई जब कोई आप मेडिसिन परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखती होती है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। सो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इट इज टू द पॉइंट एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। ओके, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल। वहां पर नीड ऑफ पेशेंट को रियलाइज करते हुए, जिसमें अपने अभी प्रिंसिपल में पढ़ा था क्लाइंट ओरिएंटेशन, तो आप जो सिटीजन है उनकी नीड को रियलाइज करते हुए पब बेड बनाओगे, दैट इज एनपीए। ना कि आपने एक सिंपल फॉर्मा बनाया हुआ जैसे मेडिसिन है। अब मेडिसिन हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखते हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेथड लगाया हुआ है कि ये फॉन्ट साइज में हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन आएगी हर मेडिसिन पे, चाहे वो किसी भी डिजीज की मेडिसिन हो। So we need to be prescriptive, which means that we need to be client oriented. We need to realize the need for which we are developing the public administration, that is the public, and we need not to ensure the uniformity, या हमें यहाँ पर प्रोसीजर established by law को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड फीचर ऑफ द एनपीए दैट इट इज ए वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट। यस, इसका एक एंटी गोल था, एंटी पॉजिटिविस्ट, कि आपको वैल्यू फ्री रहने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पोजेजिंग द वैल्यू डजंट मीन द पार्शियलिटी। पहले वैल्यूज पोजेज इसलिए नहीं करने देते थे कि पहले जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हुए थे उनके अंदर ऑब्जर्वर इफेक्ट माना जाता था कि अगर जो ब्यूरोक्रेट है अगर वो खुद की वैल्यूज पोजेज करेगा तो जो उसके डिसीजंस होंगे दोस डिसीजंस विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव एंड रेशनल। तो अब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यू नीड टू बी रिमेन द रेलेवेंट एंड फॉर दैट यू नीड टू पोजेस द वैल्यूज लाइक द सिंपैथी। सो इट इज नॉट नथिंग बैड इन पोजेजिंग सम वैल्यूज till the time those are positive values. Similarly, it is change oriented. It is change oriented. बेसिक पर्पज इसका इतना ही था कि यू नीड टू कीप रेलेवेंट विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी। So if you want to keep relevant with the circumstances of the society, you can't be a believer of the status quo. Obviously, you need to be of the changing nature. You need to have that much flexibility. Similarly, it is client oriented, which means that the basic aim of the NPA is to ensure the happiness and welfare of the client, that is the citizens. तो ये जो भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, और स्ट्रक्चर्स और डिसीजंस के अंदर जो मेजर फोकल पॉइंट रहेगा दैट विल बी द सिटीजंस, नॉट द गवर्नमेंट और द प्रोसेस। सिमिलरली, इट इज बिलीवर ऑफ पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, सो आप सोसाइटी के अंदर दो सेक्शंस में डिवाइड नहीं करोगे जैसा कि नॉर्मली होता है, वन इज द रूल्ड क्लास एंड वन इज द रूलिंग क्लास। वैसा नहीं कर क्लियर का डिस्टिंक्शन नहीं होकर देयर विल बी कन्वर्जेंस बिटवीन द रूल्ड एंड रूलिंग, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द रूल्ड वन एंड रूलिंग वन। उसको अपने कहते हैं एनपीए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द एनपीए, और दैट इज हाउ एनपीए इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Now if we go back to the question, then when we had one 10 marker, the question was that new public administration was much needed step to keep discipline relevant. Yes, relevant रखने के लिए जरूरी था, because before that or before emergence of the NPA, the public administration became rigid, the public administration lost its relevance, the public administration became highly bureaucratic, the public administration became highly technical, the public administration became highly complex. अब इन सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना था क्लाइंट ओरिएंटेशन में, चेंज ओरिएंटेशन में।
It has been successful in achieving its objective. Yes, with the increasing time, the role of the government is increasing in the economy. Then they may not have the more powers, but now the governments play an active role in the socio-economic stability of the country. And as of now, we are facing the frequency of the crisis is increasing. That may be the crisis because of the epidemic, that may be crisis of the economic crisis. So with the increasing crises, the role of the government will increase, and the governments have been able to take responsibility in these changing circumstances only because of the NPA. If we would have stick to the old or traditional public administration, then we would not have been able to deal with these emerging threats to the humanity. That threat may be in the nature of some cyber crime. So when subjects or the threats are emerging, that may be in the form of the climate change. So if new type of the threats are coming to the humanity, we need to have the public administration which is dynamic. We need to have the public administration which is change oriented. We can't deal with the static public administration. So because of this NPA only, the public administration has been able to remain relevant till time. देखो approaches and views same बात होती है. For example, we have the approaches of the public administration, that is basically how do we look at this particular topic whatever we are talking about. So there can be approaches of the public administration जो हमारे पास 7-8 अप्रोच जो होती हैं, तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं वही अप्रोच होता है और उसी को अपने व्यू पॉइंट्स कहते हैं. ये व्यू नहीं होता, व्यू पॉइंट्स होते हैं. ठीक है महिपाल जी. So this is the NPA. Now we have the next topic, that is new public management. Very small topic. अभी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या था? 1990s के अंदर जब लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया में 1990s हो रहा है, दुनिया के अंदर 1980s 75 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ है. When there was phase of the liberalization in the world and in India, तो अब गवर्नमेंट को एक जो पहले अपना रोल, ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटर या अंपायर का रोल तो हमेशा से प्ले किया गवर्नमेंट ने, बट उसके साथ साथ दे हैड द रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज और इकोनॉमिक मैनेजमेंट. बेसिकली अभी तक अपने जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज सोशल एडमिनिस्ट्रेशन. NPA was about the social administration. The same thing applied to the NPM when it comes to the economic administration of the society. So जो चेंजेस सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में एनपीए के थ्रू किए गए हैं, वही चेंजेस इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एनपीएम के थ्रू इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए हैं. बेसिकली एनपीएम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं उनको पीएसयू पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और जो पीएसयू के रिगार्डिंग उनकी थॉट है मैनेजमेंट की वो चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड एनपीएम. So what does it mean? It means meaning of NPM, process of implementing. So NPM is process of implementing principles of liberalized economy in management or for management of public sector. For management of the public sector. तो कुल मिलाकर इसको दूसरे वर्ड्स में अपने जो कह सकते हैं, दैट इज in other words improving PSUs or public sector undertakings by adopting practices from private sector. तो जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बिजनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको आप जब अपने पीएसयू मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट करते हो, दैट इज नोन एज दी एनपीएम. इसी को दूसरे वर्ड्स में कुछ स्कॉलर्स जो है इज नोन एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर government, because here government will properly behave as a businessman, not as the government.
So this is called NPM. Okay, so NPM is all about improving the PSUs by adopting the best practices of the private sector. Now this concept of the NPM is based on 3 E's. And what are the 3 E's of the NPM? So 3 E's of the NPM are the economy, efficiency and effectiveness. One is the economy, one is the efficiency and one is the effectiveness. So these are the 3 E's of the NPM. या ऐसा कहा जाए कि एनपीएम के अंदर बेसिकली इन 3 E's को इंप्लीमेंट करना इन द मैनेजमेंट ऑफ द पीएसयूज, सो दैट पीएसयूज विल ऑब्वियसली इंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो मैंने जैसे पहले कहा था कि एनपीए या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रोल एनपीए के अंदर जो चेंजेस किए गए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, वही चेंजेस आपको करने हैं इन द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंसेप्ट ऑफ द एनपीएम. नाउ कम्स द क्वेश्चन एनपीएम, the principles of NPM. So if we talk about principles of the NPM, then first and foremost principle is implementing 3 E's in PSU. So the basic target is on implementing 3 E's. Now what are 3 E's? Economy, efficiency and effectiveness. Now economy means you will have to ensure that you produce in the large amounts so that you achieve the economies of scale. When you achieve the economies of the scale, the cost or the per unit cost of the production goes down, and that is how the profit of the PSU goes down. Efficiency means the basic principle of the efficiency, which means that you will have to produce more output with using less number of the resources, because if you produce more output with using less number of the resources, then only you will be able to earn the profit, otherwise you will not be able to earn the profit. Effectiveness means you will have to ensure the processes which are able to achieve the objectives. So so you can't keep on running the loss making PSUs. You will have to implement the necessary changes in the loss making PSUs to make it effective. So these 3 are implemented in the PSUs as a part of the NPM. Similarly, changing bureaucratic structure to improve economic administration of the country, जैसे अपने ऑफ कंट्री, जैसे अपने अभी बात की थी कि हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अंडरगॉन चेंज ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन. तो जो जो चेंजेस हैं लिबरलाइजेशन की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चेंजेस आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. थर्ड, increase competition in public sector, so you need not to give protection to the public sector, and you will have to ensure that the public sector units are able to compete in the open market, because if they don't compete in the open market, they don't have any motivation to improve themselves or to increase the efficiency. But if they know that they will have to compete with the open market, they will have to change their efficiency, or they will have to increase the efficiency, otherwise they will not be able to survive. So it is the survival of fittest in the open market basically. So these are basic principles. Now comes the features of the NPA. Sorry, NPM, not NPA. One is restructuring government organization. It talks about restructuring government. Government organization. Similarly, it talks about better services to the citizens. Similarly, it talks about promoting 3 E's
or promoting efficiency specifically, or we can call it the optimum utilization of the resources basically. That is, it wants to make the economic management which is consumer oriented, or it want to make it consumer orientation. Similarly, it want to focus on the efficiency and effectiveness. So these are the principles and features of the NPM. Now we have the next concept, that is development administration, one of the most important topic from the perspective of the question in the exam. So what is development administration? So development administration के अंदर कुछ questions हैं, पहले अपने वो discuss कर लेते हैं, then we will move to the answer of these questions. So first question is, what do you understand by the development administration? And second question is, who is credited with the concept of the development administration? In what circumstances development administration got its way? Similarly, in the 5 marker, there can be question about how development administration is different from traditional administration. And second, give major features of the development administration. In the 10 marker, there can be a question, development administration is need of R but it has its own shortcomings. तो basically हमें इसकी importance बतानी है और इसका criticism भी करना है, दोनों को हमें बैलेंस करना है. देखो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था कि अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, वो जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका फोकस होता था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली. हालांकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हैं उन पॉलिटिकल डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया जाए विद द एफिशिएंसी. So the basic aim of the traditional public administration was to implement the decisions taken by the political executive or the political legislature. वो कभी भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होते थे, या ऐसा कहा जाए कि एक तो होता है कि आपका बहुत सारे काम में से एक काम डेवलपमेंट है. तो ट्रेडिशनली बहुत सारे काम थे, उनमें से एक काम डेवलपमेंट था. तो डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द टास्क गिवन टू द ब्यूरोक्रेसी, बट डेवलपमेंट वाज नॉट द ओनली टास्क गिवन टू द ब्यूरोक्रेसी. But when you enter the phase of the development administration, then the only task available to the bureaucracy is the development basically. So all the resources will be diverted, all the structures will be established as per the need of the development. उसको अपने कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो दो कंसेप्ट्स होते हैं यहाँ पर. एक होता है जैसे अभी अपने पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम राइटिंग इट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वर्सेस अर्लियर वी यूज्ड टू बिलीव इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट. तो हम पहले इस पे फोकस करते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल द ब्यूरोक्रेसी administer many things. Out of that, one task of the bureaucracy is the development process. So they will have to establish the structures to manage the development process. Now in the development administration, whole and sole focus of the bureaucracy is on the development. So that is called development administration. So let's first write down the definition of the development administration. And in case of the development administration, the best definition is given by the George Gantt. So meaning, अपने एक बेसिक डिस्कस कर ही लिया. अब फॉर द राइटिंग इन द एग्जाम, द डेफिनेशन ऑफ द डीए. डीए is that aspect of public administration, in which focus is on organizing and establishing public agencies. तो आपको स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बिठानी है बेसिकली कि आपका जो फोकस है दैट शुड बी ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Establishing public agencies in such a way that public agencies to ensure socio-economic transformation of society. This is called DA. So DA is
broader concept where the whole and sole purpose of the bureaucracy is the development or socio-economic development of the society, and development should not be one of the tasks. Earlier it used to be the one of the tasks. Now comes the question. So credit of DA. So there are two people. One is who coined the term. So this term was coined by an Indian that is known as the UL Goswami in 1955. So the term was developed by the UL Goswami in 1955. He wrote an article that is known as Structure of DA in India. So he wrote an article, and the title of that article was Structure of DA means Development Administration in India. So in that article he used the term development administration. But the father of the concept is considered the George Gant. Father of concept was the George Gant. George Gant wrote a book that is known as the Structure, Concept and Goals and Methods. DA, Structure, Concepts, Goals and Methods. So this was the name of book in 1979. He wrote that book in the 1979. So term was coined by an Indian. The name of the Indian is the UL Goswami, and overall the academic structure of the subject or the academic structure of the topic was decided by the George Gant. Now comes the question that in what circumstances this particular development administration was evolved, or we have a question in what circumstances development administration got its way. Though this question has been put in the 2 marker, but we need to understand this question from the perspective of the 5 marker basically. 2 marker में तो आपको only 2 marker और 5 marker में difference क्या आएगा? 2 marker में आपको only जो अभी अपने headings लिखेंगे वो लिखनी है, और 5 marker में आपको heading के साथ थोड़ा सा उसका brief explanation भी देना है. तो पहले अपने इस क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं. सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डीए. अब ये देखो 1980s 1970s ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर वर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है. रीस्ट्रक्चरिंग कैसी हुई है कि this was the time period when the European masters from the African countries as well as the Asian countries were moving away. इंडिया को भी 1947 में आज़ादी मिली. अगर आप वर्ड स्ट्रीम पढ़ते भी हो कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद देयर वाज डीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना. दैट प्रोसेस वेंट ऑन फॉर द 10, 15, 20 years. So during this decolonization of the world, it was for the first time that most of the African countries and many Caribbean countries as well as the Asian countries, and specifically the African countries. So most of the African countries got their independence for the first time, and now it was in the hands of the local people. Now, when we get the independence, or when India got the independence, the basic aim or basic dream of the independence was to ensure the socio-economic transition of the people. Because if the socio-economic transition of the people is not done, then what is the real purpose of the independence? We were living earlier also, we are living now. If there is no change in the life standard, then what is the purpose of the independence? So that was the focus of the Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, everyone who fighted for the Indian independence basically. The same rule applies to those societies also. So when those societies got the independence, and it was for the first time when they got opportunity to decide their fortune, so their focus was on, then primary focus was on the socio-economic transition of those societies. So decolonization gave a catalytic factor or catalytic input to the development administration. Similarly, it was the time when it was realized that the Western model was not sufficient for the development. Western model means the model of the European countries, because the circumstances of the European countries were totally different from the African countries. The European countries were kind of the masters, whereas the African countries were kind of the slaves or the servants. So obviously the thing which worked for this master can't be considered suitable for the servant also. So, and again, the Western countries, though they were spending a lot of money on the development process,
but they were again emerging out of the destruction of the Second World War. When they were emerging out of the destruction of the Second World War and Cold War was still going on, so things were not at all happy in those countries also. So those countries can't be put as an ideal country in front of the African country. So African wanted to carve out their new path, their new journey, which is not imitation of the European countries. Similarly, in 1960, there was a development in the USA, that is formation of a particular organization, and that organization is known as the American Society for the Public Administration. American Society for the Public Administration. This organization, titled American Society for the Public Administration, was founded in the 1960 under the chairmanship of F.W. Riggs. ये जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इसने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नए नए इनपुट्स दिए. ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस पहला, इमर्जेंस ऑफ, या वी कैन कॉल इट डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका. Second, failure of Western model of development. Third, formation of American Society for PubMed in 1960 by F.W. Riggs. So these are considered the circumstances which led to the development of the public administration. Okay. So now coming to the question that what are the major characteristics of the public DA? Characteristics of DA. This is very important questions of DA. One is the change orientation. The biggest problem in the traditional public administration, and this problem you can realize in India also, is that the bureaucracy, or the major shortcoming of the bureaucracy, is the maintenance of the status quo. Because if you decide to change something, then you will have to work for that, obviously. You will have to play a role. But if you believe in the status quo, then you need not to do anything and there will be no blame game. What if you take responsibility of creating something and that goes wrong, then who will take the responsibility of that? So to avoid that embarrassment, the basic nature of the bureaucrats is to maintain the status quo. And if you are believer of the status quo, then you can't change the circumstances of the society. To change the circumstances of the society, you will have to take the lead, you will have to do the action. Without action, things can't be changed. So the basic focus of the development administration was the change orientation basically, or we can call it removing or eliminating tendency of status quo. Tendency of status quo. If you remember, then in India during the 2010 to 2012, we have a particular term going on that was known as the policy paralysis. So most of the developing countries, or the most of the traditional administrative countries, they suffer with the problem of the policy paralysis. There are problems, government want to do that, but government will only talk, will not do anything. That is known as the policy paralysis. And the same problem India faced during the 28 to 2010. There was a prominent term in the newspapers of India that India is facing the policy paralysis. The government is not framing the policies, because if you frame the policy, then there will be scope of going it wrong, and if it goes wrong, then there will be blame game for the corruption and you may be caught. So what is the best policy? You don't do anything. That is the status quo. But if you believe in this status quo, then how country can progress? So to ensure the progress, you will have to be a change oriented. So the main focus of the DA is on the change orientation. Second, goal orientation. Goal orientation means you will make the processes which are very time bound. So you will decide a goal that I want to achieve this goal in this much time, and will
ensure the process fulfills that goal. Now, this is the basic problem in all the developing countries, and this is the basic problem with most of the democracies itself. The process are not time bound. We know that in the infrastructure, we have planned multiple projects. We know that these are shortcomings of the India, and we should do that. We are ready to do that. It's not like that the government doesn't understand the problem. Government understands the problem. Government wants to work for that, but the project starts in the 1960s and the project is still going on. So that happens when you are not goal oriented. You simply believe in doing. जैसे अपने कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. So the basic tendency of the bureaucrats is that चल रहा है, हमें नहीं पता कब तक हो जाएगा, but हो जाएगा. We are doing it. The only focus is doing it. But when we don't know that, तो वो अपने नेचुरल पेस पर चलता रहता है. वो उसको कैटालिटिक इफेक्ट नहीं देते. जब तक वो उसको कैटालिटिक इफेक्ट नहीं देते, वो पेसअप नहीं होता. जब तक वो पेसअप नहीं होता, तब तक आप कंट्री की बहुत फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी द गोल ओरिएंटेड. फॉर दैट यू नीड टू एस्टेब्लिश द प्रोसेसेस विच आर वेरी टाइम बाउंड इन नेचर. सिमिलरली वी हैव द क्लाइंट ओरिएंटेशन. Client orientation means considering specific groups of public, specific demographic groups as client, group as clients, and ensuring their satisfaction तो क्लाइंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप जब पॉलिसी डिजाइन कर रहे हो, then you should consider that the citizen for which you are designing the policy, because obviously the ultimate consumer of any decision of the government is the citizens only. So citizens should be treated as client. For example, if you are working in the women empowerment ministry, then women is your client. So all the policies should be designed keeping in mind the need of the women in mind, rather than keeping in mind the need of the political masters in mind, rather than keeping in mind the traditional processes. जो हमने कहते हैं ना कि we have a concept called zero based busting और outcome busting. वो जो zero based busting और outcome busting होती है, that comes from the concept of client orientation only. क्यों? क्योंकि उसमें आप ये इसलिए कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करते कि ट्रेडिशनली चली आ रही है. आप किसी हर स्कीम की नीड को इवेल्युएट करते हो और उस इवेल्युएशन के बेस पर डिसाइड करते हो कि आपको ये स्कीम कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी. सो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट ओरिएंटेशन. सो यू नीड टू कंसिडर separate sections of the society should be considered client of your services, and your basic aim should be the maximum customer satisfaction or client satisfaction. So that is called the client orientation. Similarly, the another aim of the or another feature of the DA is the participative administration. Participative administration. Participative administration means you need to be, we can call it, rather than, if you want to use another word, then you can call it the responsive administration. Basically, responsive means you can't be like rigid. You will have to learn, you will have to listen the demands of the people, and as per demands or as per ideas given by the people, you will have to work down. That is responsiveness. Similarly, we need the innovation. You need to have the innovative practices, because obviously the traditional methods are not working. We are using them again and again. हमने सभी मेथड्स जो पिछले 75 इयर्स में एक्सपेरिमेंट कर लिए कि ऐसे करेंगे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हो चुके, वो फेल हो जो चुके, उन्हीं पे स्टिक क्यों रहना? कम ब्रिंग समथिंग न्यू. फॉर एग्जाम्पल, दी प्राइवेट कंपनी जो होती है, वो अगर उनका कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट के जो फेलियर वाला कंसेप्ट है उसी को रिपीट थोड़ी करेंगे. वो क्या करेंगे? उसकी पैकेजिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके डायमेंशन चेंज करने की कोशिश करेंगे, या कुल मिलाकर ये डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि कैसे इसको हिट कराया जा सकता है, एंड टू इंश्योर दैट दे विल डू एनीथिंग. So the same mentality or the same psychological approach need to be implanted in the government officers also. Similarly, effective coordination. The development or administration is
simply based on the effective coordination, because till the time all the departments of the government, all the officers of the government don't have a single aim of the development. Even if one department is working for the development but other departments are not working for the development, then development can't happen. Development can happen when all the government machinery is oriented towards the development. For example, how things changes in the election in India. When there is election in India, the government machinery totally changes, because every one of the government works for the election, or most of the people who are given the duty of the election. Similarly, simply the Nakabandi will be improved, from where the police force comes. Simply the tight regulation will be there. Simply no bad news will be coming to you. So these things changes, or there will be no corruption cases. Every government employee will be very responsive in nature. Every government employee will treat you very fondly in the election time. They will treat you very positively. So how things changes? That is because all the officers, all the departments have the same mentality or same objectives, that is to ensure the free and fair election. Similarly, we need to have the same mentality for ensuring the socio-economic development of the country. That is possible only if there is strong coordination or effective coordination between the departments and officers of the government. So the basic feature of the development administration is the effective coordination among the government agencies. Okay. Now comes the question that how the development administration is a difference between DA and traditional PubEd, or the general PubEd which we know. So if we talk about difference, so there can be multiple parameters. Here we can write the DA, here we can write the PubEd, and here we will use the various parameter on which the difference can be made. So whenever you are using the tabular form for the answer writing, remember that there should be one small box here on this side, on the left side, where you can write the parameters. Because whenever you classify or whenever you differentiate something, if you write the parameter over there, then you will have to write very less in these columns. Otherwise, you will have to be little bit explanatory in these columns. But if you segregate out the parameter, then you need not to be explanatory in these columns. Okay. So if first of all, scope, obviously DA is a narrow concept because it primarily focus on development only, whereas the public administration focus on overall administration. So DA is smaller concept or narrower concept, and the public administration is a broader concept. Second, focus. Here focus is on change of circumstances, so it is change oriented, and here focus is on status quo, so they are anti-change, we can call it. Similarly, type of structure or bureaucratic structure. Here the structure should be very flexible and responsive. Here basically this is the goal oriented and not the process oriented. And here we have the process oriented structure oriented, hence rigidity in the structure. So we have the rigidity in the structure. Similarly, we have the power sharing or power structure. So this, because they believe in the participative administration, so basically they believe in the decentralization of the power, and they believe in the centralization of the power, or power should lie with the officers only. Concentration of the power, we can call it. So the only officer should be powerful and all the public should be powerless. Now comes the question of nature. It is simple, it is complex.
So this is the difference between the DA and traditional administration. Okay. Now there is one more question in the DA, that is about the approaches of the DA. Approaches of the DA, that how you should ensure the development administration. Basically, the approaches here means how you should ensure development administration in your country. So in case of the approaches, we have two approaches. One is the early approach and one is the contemporary approach. Early means the traditional, basically. Contemporary means the present. In the early approach, there were various models. पहले क्या होता था? In the earliest time of the DA, that is 1960s, 1970s, it was a common thought that the African countries should imitate the process of the Western countries, or the development journey of the Western countries should be with dependency on the Western countries. So Western countries should be the focal point of the world, and the African countries should try to develop themselves with the help of the Western model or Western country. So that is the early approach. So in early approach, we have various model. For example, economic model. One model is economic model. It means we are talking from the perspective of African countries, basically. First save, then invest. So it doesn't work in the economics. So it was argued that first the African countries should try to increase their socio-economic status first. So country should not invest by taking the debt. So that should not be debt financing. So obviously, if you go by this pace, then by what time you will be able to save, and by what time you will be able to invest. So this model was not accepted. Similarly, we have the diffusion model. It means African countries should borrow methods and processes from resources, technology. There can be diffusion of anything from Western world. So basically, it was argued that the development of the African countries should be dependent on the Western world. Similarly, there was a psychological model. Now, psychological model was it was an attempt to create the inferiority feeling in the African or superiority of the Europeans. The same thing has happened with every country which was earlier colony of the European powers. When they moved out, they tried to create the feeling of the superiority and the The same attempt was made with the African countries. So psychological model says that the African population does not have required psychological traits to develop themselves. For example, it says that you need to be Gujaratis only or Marathis only, Marwadis only. If you have those type of the nature, then only you can think of the development. If you are not of that mentality, then you should not think of the development, but it should not be the case. So these were the early models. Now all these models were rejected and contemporary approach was adopted. It means DA as per need and as per circumstance. तो बेसिकली इसमें ये कह दिया गया कि let the African countries decide, every country will decide its fortune by itself. So they should do whatever they want to do as per their circumstances. There should not be a single model which should apply to all the countries. Okay. Now comes the question, as we already discussed, the criticism or the shortcomings of the concept of the DA. Criticism. First thing is that because it is all about the development or socio-economic development, and since the socio-economic development is need of far for developing countries only, so this particular concept is not relevant for the developed countries. So relevant only for the developing countries, because
it is all about the socio-economic development, and socio-economic development is a major problem as well as concern in developing economies only, relevant for developing economies only. Similarly, it is change oriented. It is change oriented, hence may no loot, may not preserve the heritage of country, basically the cultural heritage. It says that because the main focus of the DA is on the change, so they want to change anything, everything. If they want to change everything, so it may be possible that they may also not preserve the key points of the country. Similarly, applies only with literate population, hence may not be suitable for tribesmen. So these are the few of the problems with the development administration. And similarly, we have a problem, very flexible system, hence government may not retain control or regulatory control, may not retain regulatory control. Okay. So these are few of the problems of the development administration, and as I already told you that there is one concept, administration of the development, that we already discussed. So now let's go back to the questions. So what do you understand by the development administration? We have already discussed that. Who is credited with the concept of the development administration? Goswami and Gantt. In what circumstances development administration got its way? Decolonization, as well as the main reason was decolonization. Second, failure of the Western model. Third, formation of the American Society for the Puppet. 5 marker, how development administration is different from traditional administration. We gave the difference in the tabular form on basis of various parameters. So you need to just make that table. Similarly, the next question is about give major features of the development administration. This value orientation, change orientation, we have already mentioned all the features. These are the features of the public DA. One is the change orientation, one is the goal orientation. Similarly, the client orientation, the participative administration, innovation and effective coordination. All these features we have discussed in the detail. So these are the few questions from the development administration, and we have answered all the questions of the development administration. So with this we complete our task of today's class. In tomorrow we will be there with a new class with the remaining topics of the puppet. Tomorrow we will discuss the next part of the topics. Till that time, have a good day. Thank you. Keep watching.